जय भीम नमो बुद्धाय संजय भैया, अजय भैया थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग कैसे हो?
जय भीम सोनू भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? आप बताइए आप कैसे हो?
थैंक यू सिस्टर। सेम सिस्टर, थैंक यू सो मच। कैसी हो आप? फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू सो मच। कैसी हो आप? लाइव में जुड़े सभी भाई बहन को जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। हम ठीक है, बताइए आप कैसी हैं? हम भी ठीक है। फूल कुमारी दीदी जी ठीक है, हम भी। परवीन भैया जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच भैया, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। कैसे हैं आप? कंचन लता सिस्टर जय भीम, नमो बुद्धाय आपको हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच सिस्टर, लाइक कर दिया। बताइए कैसी हैं? ठीक है भैया, परवीन भैया हम ठीक है। आप बताइए आप कैसे हैं? आज तो हमारी लाइफ में कोई नहीं आया। सॉरी भैया, परवीन भैया, स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा मेरा। सॉरी चाहूंगी। 1 घंटा लाइव चलाया, सिर्फ 3 लाइक मिले। कंचन सिस्टर हमारी तबीयत ठीक है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक नहीं है सिस्टर, क्या करें, हमें पता नहीं क्या हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको नहीं कह रहा मैं समझ रही हूँ भैया, परवीन भैया समझ रही हूँ। परवीन भैया फिर किसको कह रहे हैं आप? सिस्टर सीरियस ना लो, जिसको भैया सपोर्ट करते होंगे, जब कोई भी किसी को सपोर्ट करता है, जब नहीं आता है तो होता है ना। चलो हमने सपोर्ट किया, कोई नहीं आया, सब लोग कह देते हैं बहन। फूल कुमारी जी आपको नहीं कह रहा, मैं समझ रही हूँ भैया। परवीन भैया जी मैं भी नहीं आ पाई हूँ, सॉरी। हमारी सेम सिस्टर बोल रही हैं शहर के लाइव में मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि एक हमारी भी लाइव चलती है, आपकी भी चलती है। फूल कुमारी सिस्टर बोल रही हैं मैं तो वैसे बता रहा था। मैं समझ रही हूँ भैया, परवीन भैया समझ रही हूँ आपकी बात को। ब्लू देने से भी ऐसा होता है क्या, बताइए? कभी कभी भैया ना कमेंट शो नहीं होते हैं लाइव में किसी के, कभी कभी होते हैं, शो नहीं होते हैं, इसलिए लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। परवीन भैया फिर किसी को कह रहे हैं आप? बहन वो एक बात बोल रहे हैं परवीन भैया कि आज हमारे लाइव में 3 ही लोग आए थे, बाकी नहीं कोई आया।
हम रोज आती हूँ पर आज आपकी लाइव मुझे पता ही नहीं चला। नोटिफिकेशन नहीं गया था। शाम वाला में आ जाऊंगी भैया जी। फूल कुमारी जी आपको नहीं कह रहा, आप तो सुबह आए थे हमारी लाइव में। कंचन जी को जय भीम नमो बुद्धाय। सेम सिस्टर आपको भैया जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। कैसे हैं आप पूछ रहे हैं, बता दीजिए। फूल कुमारी दीदी आप अपने पे मत लीजिएगा। फूल कुमारी जी कैसे हैं आप बताइए। बताइए सिस्टर आप कैसी हो। भैया पूछ रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। भैया जी हमारी सेम सिस्टर बोल रही हैं। फूल कुमारी सिस्टर बोल रही हैं। परवीन भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं बताइए। जय भीम नमो बुद्धाय भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया। परवीन भैया थैंक यू सो मच। मुझे तो ज्यादा बोलना भी मना ही हो गया है, क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं लाइव कैसे चला पाऊंगी। कोई बात नहीं भैया, एक बड़े वाली लाइव में भी आ जाऊंगी। परवीन भैया जी आप अभी अपनी लाइव चालू करिए भैया जी। हमारी सेम सिस्टर बोल रही हैं आप भी लाइव चालू करिए भैया। अभी आप कर लीजिए, सुबह नहीं चला है। हाँ भैया कर लीजिए लाइव अपनी, आप भी चालू कर लीजिए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच।
सेम सिस्टर थैंक यू। फूल कुमारी सिस्टर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सरल कुत्ता घर में आ गया था। भगाओ बहन जल्दी से। जल्दी से भगाओ उसको। ऐसे होते हैं ना कुत्ते, जब एक दूसरे को काट लेते हैं ना सड़ जाते हैं वो। और जहाँ देखते हैं ना लोग हैं वहीं जाते हैं। चालू करिए हम लोग आ जाएंगे। गए साथ परवीन भैया। थैंक यू सिस्टर थैंक यू। महका के भाग गए रे मम्मी। फूल कुमारी सिस्टर के घर पर भेजो बहन, उनको सुगंध ज्यादा पसंद है। सुबह लाइव में देख रही थी मैं। परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी फूल कुमारी सिस्टर। जय भीम नमो बुद्धाय। जिंदर भैया जी स्वागत आपका। बड़े भैया जी कैसे हो आप? थैंक यू सो मच भैया। कैसे हो? अजिंदर भैया कैसे हो? हाँ सिस्टर जी फूल दीदी जी भेज रही हूँ। हाँ बहन उनको ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छा हूँ सिस्टर जी। थैंक यू सो मच भैया। हमारे भाभी कैसी हैं? बाबू कैसे हैं? थैंक यू सो मच सिस्टर थैंक यू। सब आप बहनों का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर। बाय बाय सेम सिस्टर बाय बाय। थैंक यू सो मच। क्या भेज रही हो कंचन सिस्टर? अब तो चली गई बहन। सॉरी कल सिस्टर की लाइव पर बात नहीं कर पाया। क्यों भैया? मैं आपको बोलती रह गई, आप तो बोले ही नहीं, फिर मैं आ गई। सेम सिस्टर बोल रही हैं फूल दीदी सड़ल कुत्ता भेज रही हैं आपके पास। जब आप आई तब तो फुल युद्ध चल रहा था। अच्छा भैया फुल युद्ध चल रहा था। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था जिंदर भैया, तभी मैं आ गई। मैं नहीं तो रुकती जरूर। जय भीम नमो बुद्धा अनिल बड़े भैया जी। जय भीम थैंक यू सो मच। सेम सिस्टर बाय बाय बहन। थैंक यू सो मच भैया। सिस्टर के साथ मेरी होती रहती है आपको पता है। हाँ भैया मुझे पता है, पर आप जब चले जाते हैं ना दीदी डिस्टर्ब हो जाती हैं।
इसीलिए मैं बुला रही थी, सोच रही थी कमेंट अगर आप मेरा पढ़ेंगे तो शायद आ जाएंगे, आपने फिर भी नहीं आए, मैं भी आ गई फिर लाइव से। जय भीम नमो बुद्धाय भैया। कौन गया था? कहाँ कौन गया था भैया? मैं कमेंट करी थी, आप कहाँ गए थे तब? आप ही तो चले गए थे, मैं वहीं था, तो आप बोले क्यों नहीं जब वहीं थे तो? जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, आप बोले क्यों नहीं भैया? जब आप वहीं थे क्यों नहीं बोले बताओ, मैं भी आपसे फिर नाराज हो जाऊंगी। हम तो नहीं ना आपसे लड़ाई करते हैं, जब तक लाइव क्लोज नहीं हुई तब तक नहीं जाता। अच्छा भैया, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम भैया। तब मेरा सिस्टर से युद्ध चल रहा था। अच्छा जिंदर भैया, सभी भाई बहनों की को अनिल की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू भैया, जय भीम नमो बुद्धाय। अजिंदर भैया, आपको पता है मैं ना आज गई थी ना अल्ट्रा सिटी स्कैन कराने। मेरे ना ब्रेन से कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए डॉक्टर मुझे मना कर दिया है, ज्यादा फोन नहीं चलाना, ज्यादा बोलना नहीं है। अगर मैं कमेंट करता ना फिर सिस्टर मुझे मना लेती। अच्छा सिस्टर फिर मना लेती। अच्छा भैया एक बार बोल तो देते आप, हाँ? आप एक बार तो बोल देते, हम बोल के चले आए लाइव से। पर सिस्टर परेशान हो गई थी। हाँ परेशान तो हो गई थी दीदी, पर क्या करे भैया, मैं रहती तो कुछ साथ देती दीदी का, बट मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मैं लाइव पर ही बैठा था सिस्टर, मुझे पता था आप गए नहीं होंगे, मुझे ये चीज पता था। लेकिन कल मैं भी डिस्टर्ब थी इसलिए बोली नहीं कुछ। आप ध्यान रखो अपना भी सिस्टर। ध्यान तो रख रहे हैं भैया, ध्यान रख रहे हैं। इलाज तो 2-2.5 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। ये सिस्टर को भी पता था कि मैं वही हूँ। हमें पता है, सिस्टर को पता है कि आप जा नहीं सकते, बोलेंगे बेशक, नहीं तो क्या लड़ लेंगे पर जाएंगे नहीं। अनुमान हो जाता है हम लोगों का क्या निकला उसमें। जय भीम नमो बुद्ध। भैया जो माइंड में ना ब्लड का संचार होता है ना वो बहुत लो है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होती है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम भैया, जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट का क्या बोला भैया? अभी ना रिपोर्ट आई है ना जहां हमने करवाई है, डॉक्टर ने लिखा था। मैं तो बीच में एडमिट भी थी भैया 1 हफ्ते, फिर बीच में 3 दिन एडमिट थी।
तो अभी तो कल लेके फिर जाएंगे रिपोर्ट, जहाँ से हमने करवाया उन्होंने बताया। अभी डॉक्टर को कल फिर हम जाएंगे 11:30 बजे, डॉक्टर क्या बताता है आगे। थोड़े दिनों के लिए आराम करो आप, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ भैया जी, करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आराम करो सिस्टर, सही बात है। स्वास्थ्य सही है, सब कुछ सही है। सही बात है भैया, बट मैं अपनी बीमारी ना अपने से पाल रखी हूँ, क्या करूँ। टेंशन ज्यादा ले लेती हूँ। मेरे माइंड में ना कोई चीज सोचती हूँ वही चीज बार बार आता है। जब से मेरी मम्मी की डेथ हो गई ना, मेरे भाई की ना एक साथ हो गई ना, तब से मैं डिप्रेशन में ही सोचती रहती हूँ। लोग मुझे मना करते, लेकिन मुझे बार बार वही बात याद आती है। इसके वजह से भी हो सकता है। कल आपने युद्ध लाइव देख लिया, वरना मेरे से सुना ही था। नहीं भैया, मैं देखी भी थी, ऐसी बात नहीं है, मैं देखी भी थी। बट तब आपसे हमारी कोई परचे नहीं थी ना। हम तो दीदी के लाइव में बहुत पहले से जाते हैं। रोज तो नहीं जा पाते लेकिन जाते हैं दूसरे तीसरे दिन 10-5 मिनट के लिए जाते हैं। आपके हम सब भी तो भाई हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही लोग को देख के भैया थोड़ा सा तो मन में हौसला आता है। बहन आज कंचन लता की लाइव पर भी जब उसे समय में गया था सुबह, तो मैं नहीं थी भैया, मेरे हस्बैंड कर रहे थे कमेंट। फोन देखो कैसे मेरे साथ व्यवहार किया। जाने दो भैया, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा, आपने युद्ध पहले देखा हुआ था क्या? हाँ भैया मैं जानती हूँ, देखा हुआ था, बट आपसे हमारा कोई परिचय नहीं था भैया। जब से हम आपको जानने लग गए हैं। मिथुन को लगाकर सिक्योरिटी करता रहता हूँ। जब मैंने कहा अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, तब देखो कैसे बोलने लगी। मैं लगातार उनको सपोर्ट करता रहता हूँ। सॉरी भैया, अनिल भैया, मैं नहीं थी उनके लाइव में उस टाइम, मेरे हस्बैंड थे। मुझे ना वो सुबह डांट दिए थे कि तुम लाइव वेब के चक्कर में हमेशा टेंशन में रहती हो। और मैंने कहा तब ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही सपोर्ट कर दो। तब वो बैठ के कर रहे थे। तब तो आपको लगता होगा मैं एटीट्यूड वाला हूँ। नहीं भैया एटीट्यूड वाले नहीं हो ऐसा काहे बोल रहे हो? आप बहुत अच्छे हो। एटीट्यूड नहीं है भैया, आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। आप बहुत अच्छे हो। बहनों को इतना हंसाने के लिए कभी कभी जरूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे हो। सबकी नजरों में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट मेरे नजरों में आप बहुत अच्छे हो। मैं जब कहा कि मुझे सपोर्ट करने नहीं आई, तो कहने लगी कि जो मुझे सपोर्ट करेगा उसी को मैं सपोर्ट करूंगा। अच्छा भैया। सिस्टर का लाइव के बाद सॉरी का मैसेज भी आया था बताओ, सिस्टर से सॉरी भी बुलवा लेते हो फिर भी कंचन बहन, आप ही बताओ, क्या मैं उनको सपोर्ट नहीं करता था?
भैया सबको सपोर्ट करते हैं, मैं कैसे कहती हूँ कि नहीं करते हैं। फिर मैं मान गया। अच्छा, फिर मान गए इतना सिफारिश करवाने के बाद। ओ भैया, तभी तो अपने आप को कह रहे हो एटीट्यूड। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। आप सब बहनों के अलावा मेरी कौन सा कोई बहन है। कोई बात नहीं भैया, हम लोग हैं ना आपकी बहन। थैंक यू सो मच भैया, आप जैसे भाई हम लोगों को मिले हैं। बहुत सौभाग्य की बात है भैया, सब नहीं होते हैं। तभी तो हक से लड़ता हूँ। थैंक यू सो मच भैया, हम लोगों को बुरा नहीं लगता है, हम लोग भी आप लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। अनिल बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। सिस्टर टेंशन में पड़ जाती हैं जब मैं स्टार्ट होता हूँ। टेंशन हो जाती है भैया, जिसको लोग ज्यादा मानते हैं ना, हो जाती है उनसे टेंशन, अगर वो रूठ जाए तो। जय भीम बड़े भैया जी, अनिल बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। उनको पता भी है ये कभी जाने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं भैया, हो जाता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा मन में डाउट हो जाता है, नहीं कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई। बेशक पता होता है नहीं जाने वाले हैं, फिर भी फिर एक है धमकी। क्या भैया? धमकी की मैं लाइव नहीं आऊंगी। लाइव नहीं आऊंगी, मैं भी तो बोली थी कल लाइव नहीं आऊंगी दीदी। ऐसे लोग आके कमेंट कर देते हैं ना, मैं भी तो बोली थी मैं लाइव नहीं आऊंगी। जय भीम भैया, अनिल बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर उनको मनाओ, हाँ मनाओ। अगर झगड़ते नहीं, आप झगड़ा नहीं होता तो फिर मनाने की जरूरत नहीं होती ना भैया। अब झगड़ा होता तो फिर मनाना पड़ेगा, दोनों में से किसी को, चाहे आप मनाओ चाहे दीदी मनाए। आप गुस्सा होंगे तो दीदी मनाएंगी, दीदी गुस्सा होंगी तो आपको मनाना पड़ेगा। दो में से एक ही लोग गुस्सा हो।
सही बात है सिस्टर। हाँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम भैया, अनिल भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। तभी तो इस तरह करती हैं सिस्टर। अच्छा भैया, करती नहीं है भैया, अपनों के ही साथ होता है, जहाँ लगता है ना हमारा लाड प्यार होता है, सबके साथ थोड़ी होता है। सबके साथ ऐसे सब थोड़ी ना कोई कर लेता है भैया। अगर आप दीदी का रिस्पेक्ट नहीं करते, इतना सम्मान नहीं करते, उनको अपने जैसे समझते नहीं ना, तो फिर वो आपके साथ ऐसा नहीं करती। ये बात तो है सिस्टर। विकास भैया, स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? विकास भैया कैसे हो आप? तभी तो उनकी तारीफ आपके सामने करता हूँ, उनके सामने तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। उनके सामने उनकी तारीफ नहीं करते हैं, तभी तो चिढ़ती हैं। वो सोचती है ना हमेशा हमसे लड़ते रहते हैं, इसीलिए। खाना हो गया है आपका? नहीं भैया, विकास भैया, खाना नहीं हुआ है अभी। आपका हो गया भैया? विकास भैया, आपका खाना हो गया क्या? बहन, अब हम जा रहे हैं। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच भैया। शिवानी सल्होत्रा, आप बोलती हैं ना सिस्टर, भाभी की पिक्चर देखा दो। हाँ भैया, 1 मिनट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
साथ में बेटा है प्रथम भी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। मैंने देखा है, अभी और लोगों को सपोर्ट करना है। ओके भैया, थैंक यू। कोई बात नहीं अनिल भैया जी, कर दीजिए सबका सपोर्ट। आज हम आपको आधा घंटा ही दे पाएंगे। कोई बात नहीं है भैया। ऐसे नहीं दिखेगा, 1 मिनट। बाय बाय भैया, बाय बाय। यही ना भैया। सो क्यूट, मेरी भाभी बहुत क्यूट है। सिस्टर जी से तो लाइव वीडियो कॉल पर बात हुई थी। ओके भैया, थैंक यू सो मच। हमारी भी अभी कभी किस्मत रहेगी तो हमसे भी बात हो जाएगी। हाँ जी सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में देखना चाह रही थी कितने दिनों से। मैंने कल बोला भी था भैया आप अपनी डीपी लगाना। थैंक यू सो मच भैया। मेरी मम्मी से भी हुई थी। अच्छा भैया, थैंक यू भैया। हम आएंगे आपके घर ही, जरूर आएंगे, क्योंकि हम आते रहते हैं वहाँ। जब आएंगे ना तब संपर्क करेंगे आपसे, जरूर आएंगे, सबसे मिलने आएंगे। जब मर्जी सिस्टर, आपका घर है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जरूर आएंगे, ये वादा है। अगर आ गए उधर तो जरूर आएंगे। सिस्टर तो उस दिन भाभी की साइड ले रही थी जब कॉल पर बात हुई। हम भी भाभी का ही साइड लेंगे भैया। हम भी भाभी का ही साइड लेंगे। बिल्कुल सिस्टर। भैया फिर अकेले हो जाएंगे। भाविक सपोर्ट में साइड साइड से सब लोग खड़े हो जाएंगे, भैया फिर अकेले हो जाएंगे। कोई बात नहीं भैया, हम बीच में के रहेंगे, देखेंगे जहां आपकी हार हो रही ना फिर आपके साइड आ जाएंगे।
मैं लड़ता रहूं चाहे जो मर्जी, पर मैं केयर करता हूँ, ये उनकी भी पता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये तो एक प्यार होता है भाई बहन का, किसी का भी। बाकी जो मेन बात वो अपनी जगह है, केयर करना सबकी। थैंक यू सो मच भैया। वरना जैसे मैं बोल देता हूँ, फेंक से बाहर लाइफ से। जय भीम दीदी जी। नन्हे लाल भैया जी, स्वागत आपका, थैंक यू सो मच भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? पहचाना आपने? बिल्कुल भैया, ऐसा काहे बोल रहे हैं, हम आपको पहचानेंगे नहीं। कैसे हैं आप भैया? थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। कैसे हैं आप? आपके लाइव में पहली बार आ रहा हूँ। हाँ, आप मेरी लाइव में पहली बार आ रहे हैं, लेकिन मैं आपकी वीडियो पे जाती हूँ दीदी, मेरी एक आदत है। बोलिए भैया, नन्हेलाल भैया बोलिए। अजिंदर भैया चले गए क्या? अरे चश्मा वश्मा लेके हम तो सोच रहे थे चले गए। थैंक यू भैया, थैंक यू। नन्हेलाल भैया बोलिए, क्या कह रहे हो? मैं जिसके लाइव में पहली बार जाता हूँ उसको एक भीम शायरी जरूर सुनाता हूँ, यही मेरी आदत है। क्या इजाजत है? बिल्कुल भैया, इजाजत है, सुना सकते हैं। बता कर जाता हूँ। ओके भैया। नहीं, मैं सोची ना फोन ऑन आ जाता ना, मैं सोची चले गए आप। बोलो भैया, नन्हे भैया बोलो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा भैया बताइए, आपको दीदी वीर जी क्यों बोलती हैं? आपका नाम क्या है? अंगारे नहीं फौलाद हैं हम, बाबा साहब की औलाद है हम। चमार वंश के चीते हैं और अपने दम पर जीते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग आपके लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। सोनू कोयरी पाजी नहीं आए। आए थे भैया, वो चले गए, मैं बहुत बिजी थी उस टाइम। अजिंदर सिंह नाम है सिस्टर। अच्छा भैया, थैंक यू सो मच। आपकी दूसरी आईडी पे यही नाम है, पर दीदी आपको क्यों बोलती हैं वीर जी? धन्यवाद जी, थैंक यू भैया, थैंक यू, वेलकम नन्हे भैया। ये मेरा फेवरेट शायरी है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा होना चाहिए जज्बा, ऐसा जज्बा होना चाहिए भैया। मेरे को सब बोलते हैं वीर जी। अच्छा भैया।
वैसे पर आप कौन से जिले से हैं? मैं भैया यूपी आजमगढ़ से हूँ नन्हे भैया। आप कहाँ से हो? सब वीर जी के नाम से जानते हैं। अच्छा भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू अजिंदर भैया, थैंक यू सो मच बताने के लिए। क्योंकि पंजाब में वीर जी बड़े भाई को बोलते हैं। हाँ भैया मुझे पता है। पंजाब, लुधियाना, अंबाला, इधर के साइड में ऐसे ही बातें होती हैं, इसलिए वह वीर जी बोलती हैं। ओके भैया, थैंक यू सो मच। दीदी आप तो हमारे पड़ोसी जिले से हैं, हम भी पूर्वांचल से हैं और आप भी पूर्वांचल से हैं। क्या बात है दीदी, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप कहाँ से हो भैया? जौनपुर से? नन्हे भैया कहाँ से हो बताना। मिर्जापुर। ओके भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नन्हे भैया थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज हमारी लाइव में आप सच में पहली बार आए हैं, बाकी कमेंट के जरिए तो आते हैं। मिर्जापुर बगल में, छुरी खाए सत्तू बताए पूरी। नाम भी ऐसे होते हैं भैया। हंसी भी आती है। कभी उनको देखा सिस्टर नाम लेते? नहीं भैया मैंने नहीं देखा, क्या करें हमारा भी नहीं मन होता है कि हम नाम लें आपका, बट क्या है ना लाइव में लेना पड़ जाता है, हमें खुद ही बस अजीब सा महसूस होता है किसी का बड़े लोगों का नाम लेने में। थैंक यू भैया, थैंक यू। हम भी आपका नाम नहीं लेंगे, अब बड़े भैया ही बोलेंगे। मैं तो खुद नहीं सुना। थैंक यू भैया। है और कुछ नहीं है। इंसान जो जितना बनाता है ना यही होता है इंसानियत समाज के बीच में। वीर जी ही बोला करो। ओके भैया, ओके, थैंक यू सो मच। बड़े भैया मेरे इधर नहीं बोलते हैं, मुझे पता है। दीदी जी हम तो एक छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, बस अपना समय व्यतीत करने और समाज। भैया आप छोटे बड़े यूट्यूबर नहीं हैं भैया, अपने समाज के लिए ने बहुत बड़े हैं। सबके बस की बात नहीं होती है अपने समाज को जगाना। एक छोटा व्यक्ति जो अपने समाज को जागृत कर रहा है ना, वो सबसे बड़ा महान है, मैं ये समझती हूँ। सबके अंदर ये दिल नहीं होते हैं भैया। थैंक यू सो मच बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी वीडियो भी बहुत अच्छी होती है। मैंने आज ही शायद देखा था, आपके कमेंट भी डाला था। थैंक यू भैया, थैंक यू वीर जी भैया, थैंक यू सो मच। सीमा सिस्टर जय भीम, नमो बुधाय बहन, कैसी हो आप? स्वागत है आपका। दीदी वैसे बताइए हमारा वीडियो कैसा रहता? बहुत अच्छा रहता भैया, बहुत सीख मिलती है आपकी वीडियो से, बहुत अच्छा, सुपर एकदम। वीर जी बस। नहीं भैया। मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा भैया, मैं वीर जी भैया बोलूंगी आपको। वीर जी के साथ भैया नहीं बोला जाता, मुझे पता है आप क्या वीर जी बड़े भाई को बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ का जो है ना, आपके यहाँ का भी लूंगी, अपने यहाँ का भी जोड़ के बोलूंगी।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है भैया। और कैसी हो दीदी जी? आपकी तबीयत नहीं सही है क्या? संजय भैया बोल रहे हैं दीदी की तबीयत सही नहीं है। सिस्टर मेरी तबीयत सच में सही नहीं है। मैं गई थी हॉस्पिटल सिटी स्कैन करवाने, वहां से आई हूँ। अभी कल फिर जाना है हॉस्पिटल, देखते हैं क्या होता है बहन। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। आप बताओ आप कैसी हो? खाना पीना हो गया दीदी जी आपका? नहीं बहन, मेरा खाना अभी नहीं हुआ है। सीमा सिस्टर जय भीम नमो बुधाय सिस्टर। सीमा सिस्टर हमारे वीर जी भैया आपको जय भीम नमो बुधाय बोल रहे हैं। आजमगढ़ की एक और दीदी जी हैं, वो भी आपके ही नाम की हैं और वो भी समाज का वीडियो बनाती हैं। हाँ भैया, कंचन सिस्टर ना हमारी सिस्टर हैं। हम वो सेम सिस्टर हैं, हम उनको सेम सिस्टर बोलते हैं। पहले जब आप कमेंट करती थी तो मैं उनको ही समझता था। अच्छा भैया। अच्छा, मैं तो वही तो कहती हूँ भैया से मैं इतने दिन से जुड़ी हूँ, भैया मेरे पे कभी कमेंट नहीं आता है। मैं उनकी लाइव में देखती थी, सिस्टर की लाइव में आपको। वो भी हमारे घर से ज्यादा दूरी पे नहीं है भैया। आपके घर जाऊंगी ना तो उनसे मिल के आऊंगी। अभी तो आई थी हमारे लाइव में थी, अभी गई है कुछ पहले, कुछ समय पहले। अब तक वही हमारी लाइव को देख रही थी। हम तो काम कर रहे थे। जय भीम नमो बुद्धाय दीदी, जय भीम सिस्टर, जय भीम। सीमा सिस्टर को बताओ सिस्टर मैं कौन हूँ। सीमा सिस्टर, ये अजिंदर भैया आपको जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं बहन। सीमा सिस्टर, अजिंदर भैया आपको जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। अभी मेरा भी नहीं हुआ है दीदी जी। अच्छा सिस्टर, मैं सोचता तो कि मैं उनका सपोर्ट आईडी है, इसलिए इतना ध्यान नहीं देता था। अच्छा भैया, अच्छा कोई बात नहीं है भैया, वो भी हमारी सिस्टर ही हैं और लाइव में नहीं जाता था। कोई बात नहीं है भैया आपके, इसका हमें कोई नाराजगी नहीं है भैया। वो भी हमारी बहन है, किसी का सपोर्ट हो, हमारे समाज की जितनी बहनें हैं सब एक जैसी हैं। सीमा सिस्टर, आपकी भाभी की आईडी से आया हूँ, बोलो को है भैया की दीदी है। भैया सीमा बहन नहीं समझ पाएंगी। लग रहा है। सीमा बहन नहीं समझ पाएंगी भैया। सीमा सिस्टर अजिंदर भैया हैं, अजिंदर भैया भाभी की आईडी से आए हैं। दीदी मैं सोचता था आप लाइव नहीं चलाती। भैया मैं भी लाइव चलाती हूँ। वो तो आज नजर पड़ गई आपकी लाइव में। अच्छा, नजर पड़ गई तब आ गए, नहीं नहीं आते आप। मैं सोचता थी कि आप सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाती हैं मेरे तरह। नहीं भैया, मैं भी 2 महीने, 2 क्या 3 महीने हो गए लगभग लाइव चलाते हैं। थैंक यू अजिंदर भैया जी। अभी सीमा बहन पहचानी है भैया आपको? अब जान गया हूँ कि आपकी लाइव आती हैं, तो अब मैं आपके लाइव में आऊंगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी। आप लोग नई नई आईडी से आते हो तो मैं क्या समझ पाऊँ। आप लोग हमें भी ज्वाइन कर लो। अच्छा सिस्टर, राजेंद्र भैया तो आपको ज्वाइन किए हैं। सीमा सिस्टर जी, ये आईडी आपकी भाभी की है। हाँ भैया, सीमा सिस्टर समझ नहीं पाई हैं, अभी समझी हैं। इनको समझाना पड़ता है बकायदे अस्थाई से। अच्छा भैया, मैं समझ गई हूँ, थैंक यू बताने के लिए। सीमा सिस्टर बोल रही हैं वीर भैया जी।
जय भीम, नमो बुद्धाय। सीमा सिस्टर अब पहचाना, भैया आ गए हैं। आ जाइए सब लोग, मेरे यहाँ पार्टी हो रही है, बहुत मेहमान लोग आए हुए हैं, आप लोग भी आ जाइए। अच्छा बहन, एक कहावत पतन कैसे नहीं है, जब बारात द्वार पूजा हो रहा है तब बुला रही हो, पहले से तो इनवाइट किया ही नहीं आपने कि हम लोग आ जाएं। जब लोग सब लोग खा लेंगे, हम लोग जूठे पत्तल चाटने आएंगे का? बताओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। पाजी भैया जी ये सोनू भैया की सिस्टर है ना, तभी पाजी भैया जी बोल रही हैं। ठीक है दीदी, और भी समाज के भाइयों को सपोर्ट थोड़ा कर दूं, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। और जाते जाते एक और शायरी सुना के जा रहा हूँ। ओके दीदी, ओके भैया, थैंक यू सो मच, सुना के जाइए। और बताइए सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है बहन, आप बताइए आप कैसी हो? जय भीम सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू सो मच। जय भीम बहन। सुशीला के तरफ से हमारे बेटे को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय माता जी, जय भीम। कैसी हो आप? स्वास्थ्य कैसा है आपका? सिस्टर आज देखते हैं लाइव कैसी जाती है। अच्छी जाएगी भैया, हम भी आएंगे एंट्री करने। मैं भी अपना लाइव चलाई थी, ज्यादा देर तक नहीं चलाई, बंद कर दी हूँ अब, क्योंकि हमें आज टाइम नहीं है, मेहमान लोग आए हुए हैं। अच्छा सिस्टर, क्या है आपके घर पे, बताओ सीमा बहन। तुम्हारा तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है माता जी, दवाई वाई खाए हैं, दवाई वाई खाए हैं, ठीक है। आज युद्ध नहीं करना है, हाँ कल निराश कर दिए थे ना, इसलिए अच्छा भैया आप बस मेरी साइड लेना, चाहे मेरी गलती हो। अच्छा ओके भैया, ओके, थैंक यू। आपने पहले बता दिया है ना, आपकी साइड लेंगे। हम तो ठीक है बेटी, अपना बताइए। हम भी ठीक है माता जी, आप सबका आशीर्वाद है, प्यार है, दुलार है, हम भी ठीक हैं। नहीं दीदी, अभी नहीं हुई है। अच्छा, रुतबा ते मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच भैया, नन्हे लाल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच भैया। ये रुतबा हमेशा रहना चाहिए, जज्बा हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। कभी कभी नेट नहीं पकड़ता बेटी, हाँ माता जी, ज्यादातर गांव में प्रॉब्लम होती है नेट की, मैं समझती हूँ। आप लोग को वेट करना पड़ेगा, तभी तो पार्टी होगी, अभी नहीं हुई है, किसी को बुलाया है, वो वेट करना चाहिए। अच्छा सीमा सिस्टर है क्या, पहले तो ये बताओ ना। बारिश की वजह से लाइट भी नहीं है बेटी। अच्छा माता जी। सुशीला आंटी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी सीमा बहन बोल रही हैं। सुशीला आंटी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय।
नो साउंड। सॉरी भैया, म्यूट कर दिया था। बच्चे आ गए थे ना इसलिए। सॉरी नहीं बोलते भैया जी, फोन आ गया था तो सॉरी किस बात की बताओ। जय भीम सीमा सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच बहन। बताओ ना पार्टी किस चीज की चल रही है। और पाजी भैया कैसे हैं, खाना पीना हो गया? सीमा सिस्टर पूछ रही हैं। हाँ जी। जय भीम बहन, सीमा बहन, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। तो फिर पक्का रहा, प्रॉमिस पक्का रहा भैया। प्रॉमिस पक्का रहा, आपकी तरफ रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी जी। नहीं सिस्टर, जा तो रही है, मेरे यहाँ से म्यूट नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी साइड लेनी है, बिल्कुल आपकी साइड लेंगे। पहले बताओ भैया आवाज आ रही है कि नहीं जा रही है? वीर जी भैया बताओ, मेरी आवाज जा रही है आप तक कि नहीं जा रही है? आपकी साइड लेंगे। सारी बहनें एक साइड हो जाएंगी तो क्या हम आपकी साइड ही रहेंगे भैया? आपकी भी साइड किसी को चाहिए? हाँ, फिर जानबूझ कर युद्ध करूंगा जब आओगी। अच्छा। रुलाना है क्या दीदी को? आ रही है। दीदी को रुलाना है क्या भैया? ओके बाय बाय दीदी, मैं जा रही हूँ खाना खाने। आ जाइए दीदी जी और भैया लोग खाना खाने। ओके थैंक यू सिस्टर, बाय बाय। आप तो बता ही नहीं पार्टी किस चीज की चल रही है, हम सोचते रह जाएंगे। ओ नहीं सिस्टर। अच्छा भैया बिल्कुल, रुलाना नहीं है, नहीं तो हम भी रो देंगे दीदी के साथ साथ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सिस्टर के आंसू देख नहीं सकता। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। अब उनको मेरा नेचर पता चल गया है। हाँ भैया क्यों नहीं, आप इतने दिन से आ रहे हैं, पता नहीं चलेगा? भैया क्या है ना, देखो जिंदगी में जो अच्छे काम होते हैं ना, यही इंसान की एक छाप होती है। आप अच्छे काम कर रहे हैं तभी हम लोग आपसे इतना बात करते हैं, प्यार करते हैं, आप सबको समझते हैं, सबकी फीलिंग समझते हैं। और जो लोग गंदे कमेंट कर देते हैं, क्या पाते हैं? गाली पाते हैं ना। जिसकी लाइफ में जाते हैं वहां भी दुत्कार ही जाते हैं, ये तो हमारे भी लाइफ में आए थे, इनको गाली दिए थे, ये चीज होती है। तो हमेशा इंसान को ऐसी भाषा बोलना चाहिए ताकि उनके बारे से सब लोग खुश हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं सब जगह से गाली ही मिले, है कि नहीं? अच्छे लोग अलग ही दिख जाते हैं भैया।
बिल्कुल सही बोल रही हो आप सिस्टर। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। ऐसा होना चाहिए ना भैया, अगर आप कभी भी चले जाओ तो भी लोग मिस करें, नहीं भैया थे, ऐसे थे, हमारी सेफ्टी रखते थे, ऐसे याद करें। ये ना याद करें कि भले चले गए, गाली दे, ऐसे तो नहीं ना। अगर आप नहीं आएंगे अब हमारी लाइफ में, एक दिन अब 2 दिन नहीं आएंगे ना, तो भी हम लोग याद करेंगे भैया नहीं आए। क्यों याद करेंगे? आपके अंदर अच्छाई है तब याद करेंगे, अगर बुराई होती तो हम लोग नहीं याद करते ना, हम तो सोचते कि ना आओ, ऐसे सोचते ना। अच्छाई रहेगी तभी सोचेंगे नहीं भैया काहे नहीं आए। मैं तो एक दिन ना जाऊं ना, शिवानी के फोन पर आ जाएगा। अच्छा भैया भाभी के फोन पे कॉल भी आ सकती है होना ही चाहिए भैया, ऐसे लगा होने चाहिए। जिंदगी में किसी के साथ अपने स्वार्थ बस नहीं जीना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग को समझना बहुत जरूरी होता है। हमारी भाभी समझदार है ना, इसलिए भाभी हम लोगों को समझती हैं। बिल्कुल बोलेंगे ही, देखती है ना भाभी बैठे, तो जब नहीं जाएंगे तो बोलेंगे ही, क्यों नहीं जा रहे हो, नाराज हो क्या, क्या हुआ। आपकी भाभी कभी रोकी नहीं, क्यों रोकेंगी भैया, आपको क्यों रोकेंगी भाभी, उनको मेरे पर ट्रस्ट है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल साथ में रहती हैं। इंसान जब समझता है एक दूसरे को तो ऐसा नहीं होता है, वो आपको अच्छे से समझती हैं, आपको उनके पे भरोसा है, उनको आप पे है, तो ऐसा क्यों करेंगे। बिल्कुल सिस्टर, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात होती है, अगर जब कोई अपने घर का सम्मान करता है भैया ना, तभी वो बाहर कर पाता है, यही पहचान होती है। जब इंसान अपने घर में किसी की कद्र नहीं करता ना, तो बाहर भी नहीं करता है, ये राइट है। सब कुछ घर से ही सीख मिलती है, बाहर से नहीं मिलती है। आप अपने घर में सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको समझते हैं, वैसे आप हम लोगों को भी समझते हैं। तभी तो आप सब भाई बहनों से बात भी करवा देता हूँ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
मैं कामना करती हूँ आप जैसे भाई साहब आप जैसे सीख जाएँ, आप जैसे हो जाएँ सब लोग। भाभी की, अच्छा। थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा लगता है ना भैया, भाभी को भी ऐसे थोड़े से अच्छे लगते होंगे कि हम सबसे मिल रहे हैं इसी बहाने। सबको अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करके। पाजी और सिस्टर दोनों से बात हुई थी बर्थडे वाले दिन। अच्छा, ओके भैया। चलिए दीदी से तो बात हो गई। पाजी कौन, सोनू भैया हैं? वीर भैया जी सोनू भैया से। पाजी का नेचर भी बहुत अच्छा है। अच्छा भैया, सोनू भैया का बोल रहे हैं आप? वीर भैया जी बताइएगा। सिस्टर के हस्बैंड का। ओके भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, मैं तो नहीं देखी हूँ भैया अभी उनको कभी। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत नाइस हैं पाजी। ओके भैया, थैंक यू। जैसी दीदी हैं वैसे रहेंगे ना। सिस्टर भी अच्छी हैं। सिस्टर तो अच्छी ही हैं भैया। सिस्टर हमारी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू भैया, सबसे अच्छे आप हैं। सबसे अच्छे, क्योंकि आप समझते हैं ना, तब आपकी निगाह में सब अच्छे लगते हैं। नहीं समझते तो नहीं लगते कोई भी। नहीं तो कौन किसी का इतनी सुनता है। ना कोई सुनता भैया, ना कोई समझता है। आप भी तो अच्छे हैं ना, तभी तो केयर करते हैं।
हाँ जी, थैंक यू भैया। आप सब बहनों का आशीर्वाद है बस। थैंक यू सो मच भैया, आप हम लोगों से बड़े हो, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। बाकी हम लोगों को तो हमेशा ऐसे और ऐसे बना रहेगा। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, ये बात तो सही बोल रहे हैं भैया। बहनें छोटी हो बड़ी हो आशीर्वाद तो देती हैं, बिल्कुल राइट भैया, थैंक यू सो मच। सिस्टर, मैं बचपन से अभी तक किसी बहन को गलत नहीं बोला। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलना भी नहीं चाहिए भैया। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम बड़े भैया जी। जय भीम, कैसे हो? स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? पाजी भी जब देखते हैं ना कि ये दोनों भाई बहन लड़ रहे हैं बोलते हैं कि खुद स्लो कर सॉल्व करो। अच्छा क्या करे भैया, सब लोग समझते हैं ना, भाई बहन की लड़ाई है। जय भीम पाजी। वीर भैया जी, सोनू भैया आपको जय भीम बोल रहे हैं। भाई बहन की लड़ाई में कोई नहीं जाता बीच में भैया। मैं भाई बहन के बीच में नहीं आऊंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। सच्चाई को कभी यारो छोड़ना नहीं।
अपने वादों से मुख कभी मोड़ना नहीं, जो भूल गए भीम के एहसान को, ऐसे मक्कारों से रिश्ता भूल कर भी जोड़ना नहीं। क्या बात है, क्लैपिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू कोयरी पाजी, हमारे वीर भैया जी बोल रहे हैं आज सोनू भैया आपको। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। और बताइए पाजी कैसे हैं आप? हमारे सोनू भैया पूछ रहे हैं वीर भैया जी आपसे। ठीक हूँ सोनू पाजी, भैया बता रहे हैं सोनू भैया ठीक हैं। सोनू भैया भाभी जी कैसी हैं, गुड़िया रानी कैसी हैं बताओ। है ये सारा जहां जिनकी शरण में हमारा नमन है, उन बाबा साहब के चरण में है पूजा के योग्य बाबा हम सबकी नजर में, आप मिलकर फूल बरसाएं बाबा के चरण में। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज लेट एंट्री सोनू, आज लेट एंट्री क्यों हो गई सोनू कोरी पाजी, हमारे भैया बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। फूल कुमारी सिस्टर स्वागत है आपका बहन। जय भीम, जय भीम, जय भीम सिस्टर, कैसी हैं कंचन सिस्टर बताइए, खाना पीना हो गया कि नहीं? अभी नहीं हुआ सिस्टर, अभी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच अजिंदर भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय भैया जी, मिलेंगे फिर दीदी की लाइव में। सम्राट भैया थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट भैया, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप पहले ये बताओ। सम्राट भैया पहले ये बताओ कैसे हो आप। चार्ज कर लो सिस्टर। ओके भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज तो आपके सपोर्ट में आना है ना हमें। ये सारा जहां जिनकी शरण में नमन, हमारा नमन है उन बाबा साहब के चरण में, है पूजा के योग्य बाबा हम उनकी सबकी नजर में, हम सबकी नजर में, आप मिलकर फूल बरसाएं बाबा के चरण में। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। जय भीम फूल कुमारी सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू भैया, वीर भैया जी, थैंक यू सो मच। चार्ज कर लीजिए फोन, आज शाम को जंग तो होनी ही है। जय भीम फूल कुमारी सिस्टर, हमारे सोनू भैया जी बोल रहे हैं आपको। सम्राट भैया कहाँ चले गए आप? सम्राट भैया कहाँ चले गए? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप आए थे तो मेरी बात नहीं हो पाई। कैसे हो आप पहले बताओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। से बहन के लाइव में दीदी से मजाक हो रहा है। अच्छा, कौन सी दीदी से भैया? कौन से दीदी हैं? थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। मैं देख रही हूँ, अभी गई हूँ। जय भीम फूल कुमारी दीदी, जय भीम।
संजय भाई डॉक्टर साहब से बोल दे रहे हैं अपनी बहन भेज दो संजय भाई के पास, मेरा भाई अकेला। ये कौन सी दीदी है? महिला ब्लॉग्स चैनल। ऐसा कहाँ लिख रहे हैं भैया? जय भीम सिस्टर, जय भीम। सोनू भैया जी, भारत के जनसागर में भीम सा कोई तारा नहीं, और बोधिसत्व से बढ़कर, बोधि वृक्ष से बढ़कर पेड़ इतना कोई हरा नहीं। मानवता का जो ज्ञान धर्म ग्रंथ में लिखा है, वैसा और कोई मजहब के ग्रंथ में भरा नहीं। हमने देखे हैं इस देश के नेता मरे इसी देश के लोगों के हाथों, लेकिन मेरा भीमराव अंबेडकर किसी के बंदूक की गोली से मरा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, क्लैपिंग। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हमसे वैसे ही मजाक करती, हंसी मजाक। अच्छा भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे लगे आपके शब्द। फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों को। थैंक यू सो मच। बाय सिस्टर, बाय फूल कुमारी सिस्टर, बाय बाय। थैंक यू भैया, थैंक यू।
रीना जो महिला ब्लॉग्स वाला चैनल है दीदी बहुत अच्छी वह भी है। ओके भैया, थैंक यू सो मच। कभी आकर ज्वाइन कर लेना दीदी को, बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं और बातें भी करती हैं दीदी। उनके लाइव में जाओ तो यूट्यूब के बारे में ज़्यादा बताती हैं और अच्छी जानकारी भी देती हैं। ठीक है भैया, इस टाइम तो संभव नहीं है, जब मैं सुबह थी तब वो नहीं आई थी। ममता करड़ा और समता, जिसका है आधार हमारी उजाड़ी जिंदगी में ला दी बाबा साहब ने बहार। हमारी आजादी की कहानी लिखी हमारे भीम ने, खुशियों भरा सजाया हमारा संसार भीम ने। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू भैया जी थैंक यू सो मच। ऐसे अपने महापुरुषों के बारे में बातें करते रहो, अपने समाज को जगाते रहो। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। जागो बहुजन जागो, जागो 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 बहुजन जागो, नारा लगाओ ना। थैंक यू सो मच। बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के युद्ध घोष से आगाज करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे विचार हैं, थैंक यू। लाइक डन, थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी सम्मानित साथियों को लाइव में। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। थैंक यू सो मच भैया। जय भीम संजय भैया जी, सोनू भैया बोल रहे हैं। जय भीम संजय भैया जी।
जय भीम भैया, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू हमारे प्रिय बड़े भाई जी, और कैसे हो हमारे प्रिय बड़े भैया जी। अगर स्त्री इतनी पवित्र अपवित्र है कि मंदिर में नहीं जा सकती, तो उसकी कोख में 9 महीने पालकर जन्म लेने वाला पुरुष कैसे पवित्र हो गया। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ठीक भैया जी, आप कैसे हैं। सोनू भैया पूछ रहे हैं, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ विज्ञान में, दया में, प्यार में, लॉजिक में, समानता पर, सहानुभूति पर, ईमानदारी पर, एकता में। थैंक यू सो मच। मैं मस्त हूँ। संजय भैया बोल रहे हैं। सोनू भैया लिख रहे हैं, देश प्रेम में जितने आराम को ठुकराया है, देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमान पर ऐसा एक दीपक बाबा साहब कहलाया था। थैंक यू क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू। बहुत अच्छे। आपको ओरिजेंटल लाइट चालू करना चाहिए था, आपने वर्टिकल लाइट चालू कर लिया। भैया क्या करें ना, अब मैं कुछ काम में आज बिजी थी ना, देखे नहीं 7 बजे तक मैं बिल्कुल भी वैसे लाइव चालू करके छोड़ दी थी, इसलिए नहीं चालू करी। मैं सुबह चालू करूंगी इसको, सुबह चालू करूंगी भैया। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान ने सिखाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमान पर ऐसा एक दीपक बाबा साहब ने कहलाया था। थैंक यू भैया। थैंक यू सोनू भैया। थैंक यू सो मच। जो लोग हजारों सालों से मंदिर में बैठकर बिना किसी परिश्रम के हराम का खा रहे हैं, वह लोग आज आरक्षण को भीख बता रहे हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने करेक्ट बोला है। इसमें हम लोगों की कमी है भैया, उनकी नहीं। जो लोग तुम्हें जीते जी जज की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दे रहे, वो लोग स्वर्ग में तुम्हारे पूर्वजों तक 56 भोग पहुंचाने की बात करते हैं। एकदम राइट, करेक्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भीम जी ने हमें बलवान बना डाला है, हटा न पाए वो चट्टान बना डाला है, नए युग की हमें पहचान बना डाला है, और हवा के ये झोंके को तूफान बना डाला है। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि हमारी महिलाएं ज्यादातर धार्मिक प्रवचन में भाग लेती हैं। बिल्कुल करेक्ट भैया। थैंक यू। सही बोल रहे हैं आप। ये चीजें बिल्कुल सही। इसलिए अब ब्राह्मणवादियों के झूठे और काल्पनिक प्रचार से अंधविश्वास और अनैतिकता का विकास शिकार हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। हमारे समाज की औरतें ना झुंड बनाती हैं, थैला उठाती हैं, चलो प्रवचन में चलना है। अभी तो चिंगारी जली है, आग बनना बाकी है। जो पूछते हैं मुझसे औकात मेरी, अभी तक उनका खाक होना भी बाकी है। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। बिल्कुल राइट भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बागी हूँ मैं, बगावत सरेआम करता हूँ, और जिस जात पात रंग भेदभाव को तुम धर्म कहते हो, अरे उनकी बुराइयां मैं खुलेआम लिखता हूँ। थैंक यू सो मच संजय भैया, थैंक यू, थैंक यू। हमारे देश को आजादी तभी मिली समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जब तक छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक नहीं। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान मानव को, जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जिनको। थैंक यू सो मच भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू भैया थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। लाडली थैंक यू, क्यूट लाडली थैंक यू कमेंट करने के लिए, थैंक यू। जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। थैंक यू सो मच दिल की गहराइयों से, थैंक यू। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब खोने की नौबत आती है साहब, तब पाने की कीमत समझ नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। बिल्कुल भैया, बंद होने पे बोझ लगने लगते हैं, जब तक खुले रहते हैं तभी तक उसकी कीमत एहसास होती है। शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुअल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। मनुस्मृति श्लोक 122 अध्याय 10 में लिखा है। बिल्कुल राइट भैया। कोई लेडीज भी ऐसे बोल रही थी, एक बार आई थी तो बोल रही थी ऐसे कि इन लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, अब काम आ गया है, बाद में मिलते हैं। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कुछ तुम्हें परेशान करता है वह वस्तु नहीं, बल्कि उसके बारे में तुम्हारे विचार हैं। विवेकशील मन परिस्थिति को नियंत्रित करता, परिस्थिति उसे नहीं। बिल्कुल राइट भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है और बेच भी सकता है। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 45 जाकर पढ़ लेना। हमारे बाबा साहब ने इसीलिए तो मनुस्मृति जलाई थी, और सारे समाज की स्त्रियों को उन्होंने सम्मान दिलाया भैया, उन्होंने सम्मान दिया है, बाकी किसी की बस की बात नहीं थी। औरतों का क्या था इज्जत, पहले अब वो औरतें ही जानती होंगी। हमारे महापुरुषों की देन है, आज औरतें कहाँ कहाँ क्या नहीं बन रही हैं, फिर भी नहीं समझ रही हैं। जो ब्राह्मण श्राद्ध में गोमांस नहीं खाएगा तो उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 35। अच्छा, ये भी है। थैंक यू भैया, थैंक यू, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू। जिस दिन हर एक धर्म स्थान में ऐसे और प्रसाद की जगह फूल चढ़ने लग जाएंगे, उसी दिन से पुजारी खुद कहेंगी कि मैं मंदिर में कोई भगवान नहीं है। बिल्कुल राइट, थैंक यू सो मच। जिस देश में मंदिर मस्जिद की कमाई वहां की बैंकों से ज्यादा हो, तो उसे देश में बेवकूफों की जनसंख्या गिनना नामुमकिन है। बिल्कुल राइट भैया, थैंक यू बाबू। शिवांशी थैंक यू सो मच। चर्चा ये खास हो तो किससे भी जरूर होते हैं, उंगलियां उन्हीं पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। बिल्कुल राइट, थैंक यू शिवांशी, थैंक यू सो मच शिवांशी, थैंक यू बेटा। खुद को कमजोर साबित मत होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लग जाते हैं। बिल्कुल भैया, थैंक यू, सही बोल रहे हैं आप। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ें, किताबें ज्ञान देती हैं और लोग अनुभव। बिल्कुल राइट भैया, सही कह रहे हैं आप। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच शिवांशी बेटा, थैंक यू,
अपना दिमाग खोलो, तुम कैदी नहीं हो, तुम सपनों के लिए आसमान खोजने वाले, उड़ान भरने वाले पक्षी हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, थैंक यू सो मच। मनवादी कहते हैं कि छुआछूत, ऊंच-नीच वाली जात व्यवस्था हमने नहीं बनाई, यह मुगलों और अंग्रेजों की देन है। इससे अच्छा होगा कि यह कहो कि यह व्यवस्था बनाने वाले मुगलों और अंग्रेजों की नाजायज औलादे थे। बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। शिवानी बेटा, थैंक यू। जिस दिन तुम्हारा खून धर्म के नाम पर नहीं अपितु गरीबी, भूखमरी, जाति आधारित शोषण के नाम पर खोलने लगे ना, समझो देशभक्त बन गए। बिल्कुल भैया, अंधभक्त देश के बर्बादी का फायदा ठीक वैसे ही समझा रहे हैं जैसे LIC एजेंट पति के मरने का फायदा पत्नी को समझाते हैं। थैंक यू। जो सवाल नहीं करते उन अंधभक्तों को गुलामी की आदत पड़ जाती है और वह इस पर गर्व भी करते हैं उसमें से बाहर निकलने की बजाय। राइट भैया, थैंक यू सो मच। हमारा अंदाज कुछ ऐसा है कि जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं और जब हम चुप रहते हैं तो लोग तरस जाते हैं। जाति का समूल नाश तभी संभव है जब इन चारों का, ईश्वर, धर्म, शास्त्र, ब्राह्मणवाद का नाश हो। समझौते से एक अच्छा छाता बन सकता है पर एक मजबूत छत नहीं, याद रखना इन विचारों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जो चीज बिगड़ जाती है ना वो वापस नहीं आती है, बनती है बट नहीं। एक कबीर दास का दोहा था ना, रहीम दास का। जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपको समझ पाए क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बताती है, क्वालिटी नहीं। बिल्कुल राइट। बिल्कुल राइट, आप बहुत गहराई की बात लिखते हैं। समझने समझने का फेर है, समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। उस समय कमजोर दिखो जब आप मजबूत हो और उस समय मजबूत जब आप कमजोर हो। बिल्कुल राइट, थैंक यू।
किसी झूठे मक्कार ढोंगी बाबा के प्रवचन सुनने से अच्छा है कि किसी अनुभवी आदमी के साथ दारू पीते हुए जिंदगी के कड़वे सच सुन लीजिएगा। सच है। अच्छा, पीने के बाद सब सच्चाई बाहर आ जाती है। एक दिन आप भी करके देखो ना भैया, तब पता लगेगा कि आपकी सच्चाई क्या है। समाज की बहन बेटियों को शिक्षा की जरूरत है, व्रत उपवास की नहीं, क्योंकि रिश्ता करते समय डिग्रियां पूछी जाती है, व्रत उपवास नहीं। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम कहते हैं जातिवाद है, तुम्हें लगता है जातिवाद नहीं है, तो रोटी बेटी का रिश्ता रखो और हमें गलत साबित करो, दम है तो। बिल्कुल राइट, करेक्ट। थैंक यू सो मच। जब भारत में इस्लाम आया नहीं था तो वह कौन लोग थे जो गाय का मांस खाते थे, जिनके विरोध में गौतम बुद्ध ने अहिंसा का आंदोलन चलाए थे। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझने का फेर भैया, जिसको जिस दिशा में घुमा दिया गया वो उसी दिशा में चले गए। इधर इंडिया वाले हैरान हैं कि वह लोग कुत्ता बिल्ली कैसे खा लेते हैं। उधर चीन वाले हैरान हैं कि ये गोबर। करते हैं मोल भाव भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त, और फिर इस मूर्ति से घर में करोड़ों मांगते हैं। यह नादानी भी सच में बेशिमाल है, बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। प्रेम दो आत्माओं का मेल है और विवाह दो जिस्मों का विडंबना। देखिए, जिस्मों के मेल पर घरों में जश्न मनाया जाता है और आत्माओं के मेल पर मातम। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। भारत में गरीबों के लिए बनी योजनाओं का महत्व बस इतना है कि वो परीक्षाओं में पूछी जाती है। राइट। सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं करती है, पाखंडी लोग जब रास्ता में आते हैं तो वह सत्ता को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तुम्हारा तर्कशील होना उन्हीं को खलता है जिनकी जीविका तुम्हारे मूर्ख होने से चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। जो लोग तुम्हारे हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते, वह तुम्हारा वोट लेकर संसद में तुम्हारा हक के लिए क्या खाक लड़ेंगे। बिल्कुल राइट भैया, सही बोल रहे हो आप।
नैतिकता सिर्फ पैसों की बात है, गरीब इसे अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए उनके पास धर्म है। बिल्कुल, दुनिया का कड़वा सच, अपना हिस्सा मांग कर देखो सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे और अपना हिस्सा छोड़कर देखो सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट भैया, थैंक यू सो मच। तर्कशील ही वह दीपक है जो इंसान को जाति, धर्म और अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त कर सकती है। बिल्कुल राइट। जो समाज तर्क को नकारता है वह प्रगति नहीं कर सकता। तर्क को अपनाओ, चाहे वह तुम्हारे धर्म या परंपरा के खिलाफ ही क्यों ना हो। बिल्कुल राइट। हम उस दौर में हैं जहां सत्य, एकता, तर्क की बातें करता हुआ व्यक्ति या तो देशद्रोही कहलाएगा या तो धर्म विरोधी। बिल्कुल राइट भैया, सही बोल रहे हैं संजय भैया। आप सही कह रहे हैं। यदि आप धर्म पर तर्क और समान ज्ञान लागू करेंगे तो आप अनिवार्य रूप से नास्तिक बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ सियासत धार्मिक मसलों को शांत करे वह देश महान होता है। जहाँ सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा करे, समझो देश को गलत लोग चला रहे हैं। बिल्कुल राइट। बिल्कुल, शब्दों का इस्तेमाल आप कितनी भी समझदारी से करो फिर भी सुनने वाले अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही इसका मतलब निकालते। बिल्कुल राइट भैया, सही बात है। ये तो बात बिल्कुल सही है। जिसके मन में जैसी भावनाएं होती है ना, फिर वो उसी हिसाब से उधर ही सोच लेता है। सही बात है आपके। ब्राह्मणों ने घुसपैठ किया और तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा भक्ति आंदोलन में तब्दील करके कबीर, रैदास जैसे संतों की विचारधारा को खत्म किया। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो वो चीज। 1990-92 में जब मंडल कमीशन के माध्यम से 85% बहुजनों का संगठित आंदोलन अपने चरम पर था, ठीक उसी समय ब्राह्मणवादी ताकतों ने बहुजनों के मंडल आंदोलन को रामरथ यात्रा द्वारा कमंडल में तब्दील कर दिया। थैंक यू भैया। 1925 में पेरियार ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इसके तहत आत्मसम्मान विवाह पद्धति आरंभ की गई जिनमें लड़के लड़की दोनों को समान दर्जा दिया गया था। थैंक यू भैया, थैंक यू बताने के लिए। भारत ने ज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ था लेकिन बाद में ज्ञान के अहंकार और धर्म के झूठे पाखंड ने इसे पतन की ओर ढकेल दिया। बिल्कुल राइट। थैंक यू भैया, सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। शिक्षा का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। यदि बचपन से ही आपका दिमाग खराब कर दिया गया है या किसी धारणा में डाल दिया गया है तो शिक्षा के साथ भी उन विचारों से छुटकारा पाना मुश्किल है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे देश में जितना संघर्ष धार्मिक स्थलों के लिए होता है उतना अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होता तो देश की तस्वीर बदल जाती। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। ईश्वर का अस्तित्व हो सकता है लेकिन विज्ञान किसी रचयिता की आवश्यकता के बिना भी ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकता है। राइट, सही कह रहे हैं।
आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? बोलो। बोलो क्या हुआ? चाय नहीं पी रही हूँ भाई, दवाई पी रही हूँ, इसलिए नहीं पूछा। चाय पीती तो पूछ लेती। बहुत कड़वी लग रही है। दोनों साथ में बताओ, क्या दिक्कत है? दोनों साथ में बताओ। अच्छा नहीं लग रहा भाई। देख रहे हो कितनी बदबू आ रही है इसमें से। मजबूरी में पी रही हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। बधाई हो भैया आपको। बहुत अच्छा हुआ आ गया। आज बनाऊंगी कुछ मीठा खाने के लिए। अभी तो कड़वी दवाई पी रही हूँ। अभी मीठा में कुछ बनाऊंगी। अब मेरा भी घर होगा। बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा। सबका आशीर्वाद है आपके साथ। जरूर होगा। अब बहुत जल्दी होगा। थैंक यू सो मच भैया। पिला दूं क्या? टेस्ट करो, देखो कैसा लग रहा है। मैं तुरंत पी लूंगा, मुझे डर नहीं लगता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। ओके भैया, थैंक यू सो मच। हमारे बस की बात नहीं होती है। आई एम डॉक्टर झटका। अच्छा। नाम भी चुन लेते हो ऐसे। हमारी बेटियां जानते हो ना, सिपाही लगी हैं। उसके पापा बोल के जाते हैं ना, हम घर पे नहीं रहते हैं, दवाई तुम लोग पिलाया करो, ये पीती नहीं है, फेंक देती है। तो वो दोनों लेके आती हैं दवाई बना के, पानी डाल के लेके आती हैं। सिर्फ ना उसमें पानी पड़ता है, उनको बता के गई इतना पानी डालना है। वो बना के लेके आती हैं, बोलती है पी रही हो कि नहीं पी रही हो, बताओ, वीडियो बना के भेजो हमारे सामने, अभी पियो, पी रही हो कि नहीं पी रही हो, वीडियो बना के भेजे। ऐसे बोलती है, जबरदस्ती पिला रही है। जब तक हम पीते नहीं तब तक हटती नहीं है दोनों, समझे? सिपाही है। तब खाने में क्या बना रही हैं दीदी? मीठा कुछ भी बना लेंगे भाई, नहीं कुछ तो दलिया तो जरूर मीठी बना लेंगे।
कुछ भी बना लेंगे। खाना वैसे सब लोग खा लिए हैं, मीठी दलिया बनेगी अभी। मेरी भांजी दोनों कितना ख्याल रखती हैं, आपका बहुत प्यारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दवा पिलाने के लिए। उनको ख्याल नहीं रखती हैं भाई, बोलती हैं पीना है बताओ, नहीं तो बताऊं अभी डंडे लेकर। ख्याल रखती हैं। पापा के दोनों सिपाही हैं। नीचे रख दो। मामा क्या बोल रहे हैं? तुम हमको डांट डांट के दवाई पिलाती हो ना, जो पिलाती हो। कहाँ है? कहाँ है बताओ। मामा बोल रहे अच्छा करती हो। अच्छा करती हो? नहीं ना? नहीं ना? अच्छा करती हो कि नहीं करती हो, एक बार बोल दो। करती हो अच्छा? नहीं। आपका कमेंट पढ़ रही हैं दोनों, अभी जो लिखे हो मेरी भांजी दोनों कितना ख्याल रखती हैं, वही पढ़ रही हैं दोनों। आप फेंक दोगे कल में पियोगे नहीं। बहुत अच्छा काम करती हैं हमारी दोनों प्यारी भांजी। हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आप लिख रहे हो उतना पढ़ रही है। मामा सब बोलते हैं ना कि मम्मी को दवाई खिला देना आकर घर पे। अच्छा, पापा बोल के गए थे? मम्मी खाती नहीं है। मम्मी खाती नहीं है दवाई? हाँ। अच्छा, पापा जो कहेंगे वही करोगी? अच्छा, दवाई खाना इम्पोर्टेंट होता है। दवाई खाना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, मत हो जाओ। दवाई खा लेना। खा लेंगे, दवाई भी खा लेंगे। अगर नहीं खाए तो मार मार के खिलाओ। अरे नहीं बेटा, मारना नहीं है, खा लेंगे हम। हड़का रही हो हमारी प्यारी भांजी को, हड़काना न। अरे भैया वो हमको हड़का रही हैं। खाना खा रही हो दवाई की नहीं, डंडा से मार मार के खिलाएंगे। आप कह रहे हो हमारी भांजी को हड़का रही हो। वो दोनों हमको हड़का रही हैं, डंडा से मार मार के खिलाएंगे नहीं खाओगी तो। बाथरूम 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 ले जा। म्यूट कर करके हंस रही है। वैसे नहीं, उसको पता है ना कि सामने वैसे आवाज आएगी हमारी। म्यूट कर रही है फिर हंस रही है। राइट, हमारी प्यारी भांजी ऐसे ही इनको पकड़ के दवा पिलाओ। हाँ, ये पिलाऊंगा मैं पकड़ के दवा। कह रही है मामा से बोलो कि मैं मम्मी को पकड़ के दवा पिलाती हूँ। मुझे पढ़ने दो।
मामा क्या लिख रहे हैं, पढ़ो। मुझे नहीं पढ़ना। एक मिनट। अब आपस में कमेंट वो पढ़ रही हैं, क्या हमें कह रही है पहले यहाँ से म्यूट करो, हम पढ़ेंगे कमेंट, आप मत पढ़ो। हंस रही है पढ़ पढ़ के। जियो मेरे एसटीएफ भांजी लोग, ऐसे ही एसटीएफ पुलिस होती हैं, मुजरिम को चाहे जहां से पकड़ लेती हैं, ढूंढ पकड़ के पढ़ने दो भाई, मैं इसलिए नहीं ना म्यूट कर दे रही हूँ ना, कोई दिक्कत हो जाए लाइव में। वो दूसरा फोन लेके पढ़ रही हैं, उसमें जिससे हमने कमेंट कर रही थी उसी में पढ़ पढ़ के हंस रही है। पहले कह रही म्यूट करो तब खूब अच्छे से हंसेंगे, म्यूट करके फिर जोर से हंस रही है। फोन उन गिरा दोगी लग रहा है बाबू। मामा भी हंस रहे हैं, देखो स्माइली ग्रीन वाले। तुम उस फोन से भेज के हंस दो तो। मैंने भी भेज दिया। मामा को भेज दिया उसने भी। मामा को भेज दे तो मामा मुझे चॉकलेट देना। अरे नहीं बेटा, नहीं। मामा कैसे लिखते हैं? MAMA। मामा Live long, my dear nicest. Both of you are so strong. Keep working skill this. Thank you so much भैया, thank you, thank you, thank you भैया। अब वो क्या बोल रही है अभी देखो, कमेंट पढ़ना, आवाज को म्यूट कर दो ना, आवाज को म्यूट करी थी ना। अब वो देखो क्या भेज रही है लिख के, पढ़ते रहना, फोन उसी के हाथ में है, हम सामने बैठे हैं आपके। क्या लिख रही है? भेज दिया। भेज दिया, क्या भेजा? मामा जी मुझे लाल देखो क्या लिखी है, कमेंट पढ़ लो क्या लिखी है। पढ़ो मामा क्या लिखे हैं, पढ़ो। Yes, thank you. कर रही है वही आपसे सवाल तर्क। इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है।
जब बच्चे भी प्यार करने लग जाएं। और लोग नाइस विल बनेंगे लॉस कर मेरी मामा लगभग लगेंगे क्या लिखा Our lovely nice will bring you lots of lollipops. मामा मेरे बहुत सारे लॉलीपॉप लेके डांस कर रही हैं पढ़ के। ये लॉलीपॉप लाएंगे मामा मेरे फर्स्ट मामा को बोल देना मेरे लिए लॉलीपॉप लाने के लिए। डांस करो। हमारे सर पे करो ना। फोन गिर जाएगा। लॉलीपॉप लेंगे मामा। लॉलीपॉप खाऊंगा बहुत सारी। एक पिंक एक ग्रीन एक येलो। एक पिंक एक ग्रीन एक येलो। आप दोनों के लिए बहुत ढेर सारा लॉलीपॉप लेंगे। ढेर सारा लॉलीपॉप मामा के तो थैंक यू। मामा को मैं कहा थैंक यू करूं? मेरे लाल लाल रहेंगे तेरे लिए। अंकित कुमार हेलो, थैंक यू भैया, स्वागत है आपका अंकित भैया। कैसे हैं आप? स्वागत है अंकित भैया। हाँ कमेंट पढ़ो, कमेंट जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ज्यादा लॉलीपॉप खाओगे तो दांत चूहा उड़ा जाएगा। उठाने जाएगा। मामा से चूहा कैसे खा ले जाएगा? वो तो दांत भी नहीं। मामा से पूछो वो भी चॉकलेट खाते हैं? मामा से पूछो वो भी चॉकलेट खाते हैं? पूछ रही है मामा से, पूछो वो भी चॉकलेट खाते हैं? ठीक है अंकित भैया, ओके थैंक यू सो मच। जय भीम नमो बुधाय भैया, आपको भी जय भीम नमो बुधाय। कह रही मामा भी तो दांत चूहा उठा ले जाएगा, वो भी तो चॉकलेट खाते हैं। थैंक यू अंकित भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम नमो बुधाय भैया, कैसे हैं आप? खाना पीना हुआ आपका? मैं चॉकलेट खाता था, चूहा मेरा दांत सब रात में आकर चूल्हा ले गया था। हाँ हो गया खाना। ओके भैया थैंक यू सो मच, खाना हो गया आपका, थैंक यू। और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? बोलो मामा, आपके पास एक भी दांत नहीं बचे, आप खाना कैसे खाते हो? कहाँ गए? खाना कैसे खा लेते हो बिना दांत के, बताओ अब, जल्दी आंसर दो। देखो क्या लिखे हैं। मेरे पास एक भी दांत नहीं है, नकली दांत लगाया है, उसी से बूढ़े की तरह खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। बूढ़े की तरह।
कह रही है मामा आप नकली दांत जब बाहर निकाल लोगे तब तो आपके पास एक भी दांत नहीं बचेगा। बोलो अब, जवाब देते रहो। मामा से बात करो। जाने दो, मामा को मत परेशान करो, अपना काम कर लो, अब जाने दो। तुम मामा से बात करनी है। नहीं परेशान करेंगी भाई, जितना बोलोगे उतना परेशान करेंगे। मेरे साथ है मैच। रविकांत भैया थैंक यू सो मच भैया, जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हैं भैया आप? हमारी प्यारी भाजी हंसती हैं तो मुझे भी बहुत हंसी आती है उनकी आवाज़ सुनकर कि कितना प्यारा हंसती हैं, जैसे लगता है कोयल की तरह आवाज़ हमारी प्यारी भांजी का, कितना चहचहाती हैं। हाँ अभी तो बाकी, अभी और क्या लिख रही है? अभी तो चॉकलेट, लॉलीपॉप, अब टॉफी वॉफी क्या क्या लिख रही है। कह रही है मामा से पूछो नकली दांत लगवाए हैं, जब निकाल लेंगे तो उनके पास तो एक भी नहीं बचेगा, फिर कैसे खाएंगे। थैंक यू भैया, रविकांत भैया थैंक यू सो मच लाइक डन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं भैया, खाना पीना हुआ आपका? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? लिखे हैं देखो, लिखे हैं मेरे पास दांत नहीं है फिर भी मैं चना खाता हूँ, लॉलीपॉप खाता हूँ, चॉकलेट खाता हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ, गन्ने भी खा लेता हूँ। जब नकली दांत है तो खाते कैसे हैं? जब नकली दांत है तो खाते कैसे हो, पहले ये भी बताओ। रविकांत हमारे प्रिय बड़े भाई जी, आपको हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय। और कैसे हैं हमारे प्रिय बड़े भैया जी? साथ चले गए रविकांत भैया। मम्मी से कहो मेरे लिए पूरी दुकान खरीद के लाए। उसमें बहुत सारी चीजें होगी। मामा जी को मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाए। हाँ चीजी लाएंगे। ये थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉलीपॉप तो चूसते हैं, खाता कौन है लॉलीपॉप? मामा कह रहे वो खाते हैं। हाँ मामा गंदे आई हैं। मतलब अब मैं एक चूहा पकड़कर उसका दांत लगाऊंगा, डॉक्टर से बोलकर मैं बोलूंगा चूहा का दांत लगा दो मेरे को सब कुछ, तब मैं खाने लगूंगा। संजय भाई जय भीम, बुद्धिस्ट मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप बताओ अपना। रविकांत भैया पूछ रहे हैं संजय भैया जी। मामा मैंने भी लिखा है। हाँ पढ़ लिया तुम्हारा कमेंट मामा। मामा मेरे लिए हाँ लॉलीपॉप लाना। बहुत सारी लानी तो 10 साल की हो गई, भी लॉलीपॉप भी खाएगी? मैं भी 9 साल का। इतने बड़े बच्चे नहीं खाते लॉलीपॉप, छोटे बच्चे खाते हैं। कहाँ छोटा हो तुम? तो मामा क्यों खाते? मामा भी तो बहुत बड़े हैं। तो मामा कहाँ खाते? मामा तुमको झूठे बोल रहे हैं, खाते हैं, खाते थोड़ी हैं वो। तो नकली दांत किस लिए लगाया फिर? नकली दांत लगाया खाना खाने के लिए। तो खाते क्यों नहीं है लॉलीपॉप? बात नहीं करनी मुझे बाबू तुमसे। बात नहीं करूँगी, मैं मामा से कर लूँगा बात। अरे तो मामा से कर लेना ना, मैं मना कहाँ कर रही हूँ मत करना।
मैं आप दोनों लॉलीपॉप बहुत सारा लेकर आऊंगा, हमारी प्यारी भांजी, और एक ट्रक भर कर लेकर आऊंगा। ट्रक में 2 दुकान भी उठा कर खाते खाते सुनिए क्या मेरा भाई का लग रहा है। जितने बोलोगे ना उतने वो सब सर पे चढ़ेंगी। कह रही मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं मामा से बात खुद ही कर लूंगी, सोच लो अब। मामा ने लॉलीपॉप लेके ट्रक भर के कल। हाँ, ट्रक भर के लेके आ रहे हैं। मम्मी तो नहीं खिलाती ना। मम्मी आपका भी लिख दूंगा। हम्म? भी लाना। और रविकांत भैया, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? भी लाना। राम के दरबार में विधवा धोबिन को पेट में पैदा बच्चे की जानकारी के लिए बुलाया गया। पूरा दरबार लगा था। गुरु विश्वामित्र ने औरत से बाप का नाम पूछा। औरत ने प्रतिष्ठित आदमी होने के कारण बताने से इनकार कर दिया। अच्छा भैया, प्यारी भांजी, चूहे का दांत मेरे को अच्छा लगेगा, बताओ तब चूहे का दांत लगवा लो। डॉक्टर से बोलकर बोलो। मामा पूछ रहे चूहे का दांत अच्छा लगेगा? हाँ ठीक है ठीक है। कह रही है हाँ ठीक लगेगा। नहीं नहीं रुको मैं बताता हूँ मैं शीट करके।